क्या है इसमें रोटेट डिवाइस का? चलो कोई बात नहीं, होगा स्टार्ट। बट So good morning everybody. Welcome back to our session on the reproductive disorders in the dogs and cats. सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि dogs and cats जो है, especially dogs, I have little experience with cats, so I'm not the right person to comment on that. Dogs जैसे दांतों का डॉक्टर होता है, उसके पास क्या इलाज होता है? Similarly, dogs, any problem involving the uterus, ovaries, cervix, vagina, a subtle answer is ovarian gland. So we can do very little as far as improvement in the clinical condition. Anyway, whatever it is, the canine infertility, a lot of Lindy Boosberg, she has reported in a different way, and then one canon she has reported in a different way. But what I see is that the biometra is the most common clinical problem in dogs and to some extent even in cats. Here is we analyzed our clinical data in 2008, 164 cases. Biometra was the highest, having the highest incidence, followed by transmucosal linear tumor, then anistus and other problems. And then frequently dogs are brought for a mismatch, for a therapy of mismatch. And another 165 cases analysis in 2011, we found again that the biometra was the most significant clinical problem in dogs, and this was followed by transmucosal linear tumor, anistus, pseudopregnancy, and all others. Now, how she has some female dog brought to the clinic, and she has some or other problem relating to the investigation should include the estrus history, inter-estrus interval, the length of the pro-estrus, and the breeding history. And then whether the dog is on androgenic steroid. Here in our country it's not popular, but estrus postponement or estrus prevention is very frequent in other countries using androgen derivative Miller check crops. And so if the female dog is on androgenic steroids, that you have to consider, because a female dog on androgenic steroids for a long time period can culminate in anistus for prolonged periods. The examination should include the structural abnormalities of the reproductive tract, ovarian and uterine abnormalities. Really, it's difficult to diagnose simply by abdominal ultrasound in using in the dog and cat. Exploratory
laparotomy. Exploratory laparotomy again is very limited to some very specialized hospitals where they are not able to diagnose, so they will perform a exploratory laparotomy for diagnosis. Then vaginal cytology, hormonal panel, progesterone and brucella cases. Brucella is very frequent in canal cases amongst the canals. So brucella, the diagnosis for brucella canis and then karyotyping, ultrasonography and radiography. These would be some of the approaches for diagnosis. So we come to the actual problems in the dog. So very first is the vaginal and vulvar problems. Hypoplasia or recessed vulva in dogs is not that common, but symptoms include excessive leaking of the vulvar area, scooting, malodor, hematuria, and like that. So, for hypoplastic vulva in the female dog, I don't think we have very good options for treatment, at least. Then congenital vestibulo-vulvar stenosis. Now, this is very frequent in the dogs. The vaginal septa and circumferential vaginovestibular strictures are the most commonly reported vaginal anomalies of the dog. और इसकी डायग्नोसिस वैसे थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन अगर एक फीमेल डॉग को प्रॉब्लम हो रही है कि वो एक तो मीटिंग नहीं अलाउ करने दे रही है बिकॉज ऑफ पेन ड्यूरिंग मीटिंग, एंड देन देयर मे बी ए हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी प्रॉब्लम्स, फ्रीक्वेंट यूरिनरी प्रॉब्लम, बार बार उसको कभी पेशाब में दिक्कत होती है, कभी उसको जो है बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शंस होते हैं वल्वर लिप्स में, इस तरह की प्रॉब्लम एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है. एंड देन vaginograms, using radiopaque material in the vagina and then performing a X-ray can confirm the stricture where it is present. And the treatment suggested is surgical correction. Now, the strictures can occur anywhere. This is the cervix, and it can occur here. It can occur just just near the cervix, at the equitable junction, and it can occur at other places also. So these type of problems can be, to a limited extent, they can be repaired by surgery. And if you have suitable surgical procedures, एंडोस्कोप हो, साथ में एंडोकार्टरी वगैरह हो, तो आप कर सकते हैं. अन्यथा आप मतलब जो है स्पैकुलम लगा के ये दिखाई नहीं देती, और किसी सीजर से आप काटोगे, हो सकता है कहीं इधर उधर इंजरी हो जाए. तो बढ़िया ये होता है कि अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स के केसेस हो, तो अगर आपके पास वैजाइनल स्पैकुलम है और आप उसको कुछ किसी तरीके से इंसफलेट करके देख सकते हैं, तो भी आप सर्जरी अटेम्प्ट करेंगे. तो आप ब्लाइंड सर्जरी के मैं खास तौर से पक्ष में कि आप कुछ भी अंदर जाके कुछ भी काट दें, उसके में पक्ष. Then clitoral hypertrophy can occur in hermaphrodites, hyperadrenocorticism, prolonged androgen therapy. बहुत ज़्यादा एंड्रोजन थेरेपी अगर देते हैं हम लोग की फीमेल डॉग को आप बहुत लंबे टाइम तक अगर मिडलरॉन पे रखते हैं स्ट्रेस प्रिवेंट करने के लिए, तो भी क्लाइटोरल हाइपरट्रॉफी हो सकती है. अदरवाइज इट कैन अकर इन हाइपरएड्रेनोकॉर्टिसिज्म. तो आपको एसीकेएस की प्रोफाइल्स करानी पड़ेगी कि
KCK to KCK क्या and the therapy is clitoral resection plus neutering ovarian neutering का मतलब ये आ गया ovarian then the persistent hymen will be found in the male dog and there is a pain during mating. There may be urinary incontinence and as I said, vaginograms can be used for diagnosis and treatment, surgical correction or endoscopic guided laser ablation. Endoscope guided laser photo ablation. This is the technique where you can treat the vaginal problems of the dog. Then vaginal hyperplasia can occur due to high estrogen. It is common in first estrus and recurrence is common. It is common in Saint Bernard, Bulldog, Boxers, and treatment is menstrual acetate 1 milligram per pound for 7 days during progenesis. Or GnRH 50 microgram once intramuscular can be given. Actually, vaginal hyperplasia के लिए आपको करना क्या चाहिए कि आपको उसको अच्छे से वॉश करके ना और फिर आपको उसको कोशिश करनी चाहिए रिपोजिशन करने की. And then you apply some emollient cream and additionally you can give some GnRH or any therapy. You can even try anti-estrogen tamoxifen citrate. You can try. मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि हमारी क्लिनिक में डॉग्स कम आते हैं. But I presume it will work. Then vaginal prolapse, the entire circumference में हम तो आप पूछ रहे थे उस vaginal hyperplasia क्या पूछ सकता है? भाई एक्चुअली क्या है कि ये रिसीड तो स्पॉन्टेनियसली होना चाहिए लेकिन क्योंकि डॉग ओनर को ऐसा लगता है कि ये डॉग जो है प्रॉब्लम में है तो इसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करें तो आप उसको सिंपल यही करें वॉश करके और उसको रिप्लेस करें और कुछ एमोलिएंट क्रीम्स लगा दें और आप ये 4% xylothin जेली मिक्स विद any laramycin or gentamicin or any cream उन दोनों को मिक्स करके लगा दें तो उससे क्या उसका इरिटेशन कम होगा and then you replace it. नहीं था और so entire circumference comes out and you can see this is a uterine prolapse in a cat and this is a uterine prolapse again in a cat and this is a vaginal prolapse in a dog. और इसके कारण ये हो सकते हैं constipation is one of the biggest reasons for vaginal prolapse and forced separation during a long time. Repositioning under general anesthesia followed by episoplasty. ये आप कर सकते हैं. Then uterine infections सबसे जो कॉमन है डॉग्स में that is pyometra cystic endometrial hyperplasia complex. क्या होता है कि अगर डॉग फीमेल डॉग कैटल की तरह हर 21 दिन में हीट में आता रहे तो उसको पायोमेट्रा नहीं. उसको पायोमेट्रा होता इसी वजह से है कि उसका यूट्रस जो है प्रोजेस्टेरोन के डोमिनेंस में रहता है बहुत लंबे टाइम और प्रोजेस्टेरोन की डोमिनेंस में रहता है तो प्रोजेस्टेरोन जो है इट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. इट सीक्रेट्स plenty of fluid in the uterine lumen. During estrogen the secretions are very low, the contractions are very high, the blood supply is increased and then there is influx of TMS, polymorph nuclear leukocytes within the uterine lumen which takes care of any infection. तो dogs में ये प्रॉब्लम है इसी वजह से and then with advancing age
क्या होता है, जो लैक्ट्यूल्स ड्रेन आउट करते हैं किसी भी इन्फेक्टेड मटेरियल को या किसी भी मटेरियल को, वो लैक्ट्यूल्स हो जाते हैं कमजोर। और फिर इकोलाई तो नॉर्मल इनहैबिटेंट है यूट्रस में, इट मल्टीप्लाइज and when it multiplies and the numbers reach the pathologic numbers are there, that it results into pyometra. Pyometra is a common disease both in dogs and queens. Bacterial interaction with an endobacterium and the pronged progesterone exposure results into accumulation of uterine glandular secretion, which becomes infected by E. coli. The disease should be suspected in intact dogs and queens presenting with illness and particularly within 4 months after estrus. ये जनरली हिस्ट्री होती है कि हमारी जो है डॉग इस्ट्रस में आई और इस्ट्रस में आने के बाद उसको ये प्रॉब्लम हुई। और जैसे हमने पहले भी बात की, द डॉग विल शो साइंस ऑफ गैस्ट्राइटिस, टुटियाँ होंगी, पेट दर्द हो सकता है। So any dog which is having signs of gastritis, not responding to routine therapy, it must, and it's above 8 years of age, suspicion must be aroused for pyometra. Pyometra is of two types, open and closed. ओपन वो जिसमें डिस्चार्ज आता रहता है बाहर, और क्लोज वो जिसमें कोई बाहर डिस्चार्ज नहीं आता। तो the symptoms appear in 4 to 10 weeks of estrus. There is depression, polyuria, vomition, fever, first discharge. And sometimes the animal is severely ill, it's down, it's in a comatose condition, and it will depend on the endotoxins being absorbed and the amount of endotoxins present, the amount of endotoxins absorbed, the extent of liver and kidney damage caused, which will decide the therapy. If female dog with the signs of pyometra, you should go in for a complete CBC and the examination of the this liver and kidney function test, and if possible ultrasound, so that you can know the state. To some extent, even radiography can help, but not always. And अल्ट्रासोनोग्राफी जब करते हैं तो कई बार तो आपको ऐसे फ्लूइड देखता है केवल with some ecogenic specks. Sometimes you find circulations like this. Now this is because आपने अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखा है, आप देखिए ये एक साइड होगी, ये एक साइड, ये एक साइड, तो आपने इधर से यूं देखा तो ये आपको बहुत सारी सैक्स इसमें दिखाई देते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ ये पयोमेट्रा है। पयोमेट्रा का ट्रीटमेंट, the good resort if the animal owner does not want to have breeding from that dog is ovarian hysterectomy. But at times owners desire कि हमें तो अभी इसका एक बच्चा लेना है, ovarian hysterectomy कर दोगे तो फिर बच्चा कैसे होगा, then you can try for administration of prostaglandins. But जैसा मैंने कहा prostaglandins के severe side effect है, इससे वाले को आप पहले बता देना, भैया ये दवा लगा रहा हूँ, आप कहो तो लगाऊं, किंतु नहीं लगाओ, जिससे इसको उल्टियाँ हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह में से पानी गिर सकता है, और उल्टियाँ उसको पहले से हो रही है। तो कई बार तो ओनर मना कर देते हैं, डॉक्टर साहब मत लगाओ, उल्टियाँ हो रही, उल्टियाँ तो पहले ही बहुत हो रही है, then you can avoid it.
125 to 250 माइक्रोग्राम, पर मैं ये कहता हूँ कि छोटे जो डॉग की ब्रीड है उनमें आप मेडिकल वाला यूज कर लीजिए, वो 75 माइक्रोग्राम में भी आता है प्रोस्टोडेशन। हमने यूज किया है। Then management of a dog with pyometra under severe condition, तो आपको फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ेगी, आपको बुखार हो रहा है उसको तेज तो एनाल्जेसिक्स देने पड़ेंगे, और कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो रही है तो आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा एज व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। Sometimes you may require to administer corticosteroids, although they are not advocated, but you can still use them under very critical condition of the dog. Now we talk of pseudo-stasis or pseudo-pregnancy. इसे हमने कहा pseudo-pregnancy is a physiological use occurring once or more times in the life of the dog and sometimes in cat that show all signs of whelping, nesting behavior, memory enlargement. Exact physiology is not known, but possibly high prolactin levels and the failure of proper LS search. Now, sometimes it's like that a dog owner is desirous that all the symptoms must go away permanently. Then you can advocate him to get an ovarian hysterectomy. If he wants a permanent resolution, then ovarian hysterectomy is the best answer. Otherwise, you can try anticoagulants, you can give cabergoline, you can give bromocriptine, you can even give testosterone, and then Mifepristone for 5 days. डॉग आफ्टर वेल्पिंग, आपको पार्चुलेशन के बारे में पता ही होगा कि जब उसकी वेल्पिंग होती है तो उसका प्लेसेंटा हर पप के पार आ सकता है, 2-3 पप निकलने के बाद 2-3 प्लेसेंटा आ सकती है, या सारे पप्स निकलने के बाद ही एक साथ प्लेसेंटा आ सकती है। लेकिन प्लेसेंटा ऐसे दिखाई तो देती नहीं है बिकॉज देयर इज ए ग्रीनिश डिस्चार्ज। तो यूट्रोवर्डिंग डिसोसिएट होता है तो वो ग्रीनिश का डिस्चार्ज आता है। ए ग्रीनिश डिस्चार्ज is normal, but if it greenish discharge appears before the delivery of any pup, that is not normal because that indicates that placental separation has occurred yet the pup is not normal. Metritis जो है बड़ी severe nature की होती है, हमने एक दो केसेस देखे हैं, and the dog is severely ill, बड़ा ऐसे बिल्कुल उसको हाई टेम्परेचर होता है, कई बार रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होने लग जाता है, और जो है इंस्पाइट ऑफ रिगरस थेरेपी एट टाइम्स ए डॉग में डाई, एट टाइम्स नॉट ऑलवेज, बट इफ इट द डैमेज हैज percolated, the endotoxins have percolated inside the body very severely, resulting into septicemia, then the dog is at severe risk. It is at severe risk. Therapy, antibiotics, plus prostaglandins, plus fluid therapy, plus whatever you consider would be a good option to save the life of the female dog. अब बात करते हैं इसकी ट्रांसमिसिबल बैक्टीरियल ट्यूमर। ये जो ट्यूमर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले भी स्पेसिफाई किया कि
वर्ल्ड के ऑन्कोलॉजिस्ट की इसके ऊपर नजर है। It's a tumor which has a growth phase, a static phase, and then a regression phase. No other known tumor in the world has a regression phase. There may be a growth phase, a static phase, but it does not regress spontaneously. टीबीटी के बारे में पहले कहा गया कि ये जो है हिस्टियोसाइटोमा है, लिम्फोसार्कोमा है, और ये वायरस के कारण होता है, ये उस कारण से होता है, इस कारण से होता है, बट इट वाज देन established that it occurs, it has a cell allograft transmission, and it is a round cell tumor. कि टीबीटी का एक सेल अगर टच हो गया तो उससे दूसरे एनिमल को टीबीटी हो सकता है। It has got a cell allograft transmission. रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो जो है बिनाइन होता है, बट देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर सेल्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द यूट्रस, even the spleen, even the lungs. And in the male dog, it's very common that when a male dog sniffs the external genitals of a female dog, then it will develop TBT on the nose, sometimes on the lips, and yes, of course, because it has a sexual transmission, so of course on the glans manus, and in the female dog there will be localized small nodular to cauliflower-like grooves. It may be a small groove, or there may be a very big cauliflower-like groove in the vagina. And frequent history with this is bleeding. है ना, उसको एक frequent history होती है कि bleeding होती है, और bleeding रुकती नहीं है. So any dog with a history of bleeding, persistent bleeding, you should examine the vaginal wall. These growths will be 5 mm to 10 cm at nurse rate and intake. Then lesions will be on the glans in the male and vagina in the female. TBT arises from the dysregulated growth of cells called histiocytes. So TBT develops from skin histiocytes. Diagnosis, symptoms, biopsy, impression smears. सबसे इजी इसका जो डायग्नोसिस है वो है impression smear. हालांकि वैसे क्लिनिकली देखने से भी अंदाजा हो जाता है कि ये टीबीटी होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप impression smears बना सकते हैं, कुछ भी नहीं करें. अगर वो बिल्कुल एक्सटर्नली विजिबल है वो ग्रोथ, तब तो आप सीधा स्लाइड को उसके ऊपर टच करें, और अगर एक्सटर्नली विजिबल नहीं है तो फ्लैप लेके उसके ऊपर टच करके उस स्लाइड के ऊपर रोल करें, and then fix it up and stain with giemsa, even you can use giemsa, और ऐसे आपको brown cells नजर आएंगे. And then अगर उसको higher magnification पे देखें तो hypnotic nuclei नजर आएंगे, mitotic figures नजर आएंगे, ये चीजें उसमें नजर आएंगी. Therapy is injection with glycerin, anti-tumor, 0.025 mg per kg intravenous once weekly for 2 to 5 weeks. अब जो है, क्योंकि आप जब एंटी ट्यूमर ड्रग्स यूज करते हैं तो आई रिकलेक्ट माय सिस्टर सन, ही हैड ट्यूमर एंड वाज अंडर थेरेपी एंड अल्टीमेटली ही पास अवे. तो मुझे याद है उसकी क्या स्थिति हुई. मतलब इट कॉजेस सो मच ऑफ प्रॉब्लम. ये कैंसर जो है इसमें मतलब थोड़ी बुरी हालत होती है पेशेंट की भी, उसके परिवार वालों की भी, और डॉक्टर की भी, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं.
उसको एंटी ट्यूमर के अलावा क्या देगा करेगा, और उससे इम्यूनोसप्रेशन होता है, भूख बंद हो जाती है, बाल गिर जाते हैं, आंखें बाहर निकल जाती है, और मतलब पता नहीं हॉरिबल। तो एंटी कैंसर थेरेपी जब डॉग को भी आप देते हो तो आप ओनर को बता दो भैया ये साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं, भूख बंद हो जाएगी, बाल गिर सकते हैं, है ना, एंड द डॉग मे बी इन प्रॉब्लम बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो उस चीज को, और जब आप आईवी देंगे तो बहुत फास्ट इफेक्ट होगा। तो हम जो है, अगर आप दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं या मान लो किसी बड़े शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब तो आप आईवी यूज करें। अगर आप छोटे मोटे हमारे बीकानेर जैसे शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम तो उसको सबकट लगाते हैं। सबकट लगाने से प्रॉब्लम क्या होती है, स्किन पे एक स्वेलिंग सी हो जाती है एंड दैट परसिस्ट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो दिल्ली वाले मैडम जो होती है ना, कुत्ता लेके आते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं, डॉक्टर साहब लेके किया इसमें तो गांठ हो गई, ऐसे क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो आप, हमारे वो डॉक्टर छोटी है वो तो लगाते हैं, कभी नहीं हुआ, आप ऐसे कैसे इंजेक्शन लगाते हो? तो पहली बार आपके पास लेके आया, आपने तो खराब कर दिया हमारा। अब दे स्टार्ट शाउटिंग लाइक ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, स्टार्ट शाउटिंग। मैंने एक बार बॉम्बे वेटनरी कॉलेज में हम गए थे, तो वहाँ पर एक कोई कुत्ता लेके आई एक मैडम, और मुंह पैसे निकाल के मुंह पट के 50,000 डॉक्टर साहब मेरे मम्मी को बताओ प्लीज, हो गया कोई। Then you can use methotrexate 0.3 milligram per kg orally daily for 10 to 15 days. Cyclophosphamide 1 milligram per kg orally daily for 10 to 15 days. Radiation therapy, surgery followed by the medicine. लोग बात कहते हैं आपकी फीमेल डॉग के ग्रोथ हो रही है, सर्जरी से हटा देते हैं। तो सर्जरी से हटा के फिर विनक्रिस्टी नहीं दे रहे हो, तो विनक्रिस्टी नहीं दे दो यार, तुम अपना चक्कू चला रहे हो, ऐसे ठीक हो जाएगी। 3 से 4 डोज में जनरली ठीक हो जाती है, जनरली ठीक हो जाती है, एक्सेप्शनली एक अलग बात है, पर 3 से 4 डोज में ठीक हो जाती है। राइट है ना जी? Then we have seen cases of fibroma, lipoma, again उनका सर्जिकल रिडक्शन भी जो है ट्रीटमेंट है। Then there is a condition dystrophia adipogenitalis, which is also known as Fowler syndrome. It affects both sexes of the dog, and symptoms are obesity of the neck, genital atrophy, ulcers of the extremities, diabetes insipidus, and treatment is surgical removal of the pituitary, because it is related with the pituitary problem, and administration of thyroid extract. Hypoestrogenism, disorder of the straight tissues, alopecia of the perineum, and then it can result into urinary incontinence because of lack of estrogen. There is strictures in the urethra. Then infectious infertility, abortion, and neonatal death are common with Brucella canis, or long vaginal discharge for 1 to 6 weeks after abortion. Any camel reporting a brucellosis case must be immediately quarantined, and antibiotics like doxycycline or minocycline are ineffective. Then another common cause is toxoplasma. टॉक्सोप्लाज्मा आजकल काफी सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कैटल में भी रिपोर्ट हो रहा है, बट टॉक्सोप्लाज्मा जो है वो बेसिकली उसका प्राइमरी होस्ट कैट होता है, उसकी फीसिस में ये टॉक्सोप्लाज्मा रहता है। तो हम कहते रहे हैं टॉक्सोप्लाज्मा जो है जहाँ पर भी आप एनिमल्स रखते हैं वो बिल्ली को अलग रखते हैं, because cat feces can be mixed with the feet of cattle and maybe accidentally cattle may consume. So this is the life cycle of
and venereal transmission is possible. There will be vesicles on the vestibule. और ये तो वही dogs की बात है. Cats में इतनी सारी diseases है, which can cause abortion, feline panleukopenia, feline leukemia, feline immunodeficiency, feline enteric coronavirus, feline herpes virus, type 1, type 2, बहुत सारी diseases हैं. क्योंकि हमारा खासतौर से मेरा तो काला पड़ा नहीं है कैट से, ज़्यादा कोई क्लिनिक्स में कैट्स कभी आई नहीं, इसलिए आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डिटेल आउट एनीथिंग ऑन दैट, क्लिनिकल डिटेल ऑन दैट. देन फंक्शनल एनर्जी, पीरियड प्यूबर्टी एंड लॉन्ग. अब एनिस्टस जो डॉग्स में है वो डिफाइन किया लीडर कोर्स पर ने कि या तो कोई एनिस्टस की और 24 महीने की एज आने के बाद तो उसे एनिस्टस कहेंगे, या फिर सेकेंडरी होगा वो एनिस्टस, नो एनिस्टस फॉर 10 to 18 मंथ्स आफ्टर एनिस्टस. एक बार एनिस्टस में आ गए और 10 से 18 महीने तक वापस वो एनिस्टस में नहीं है. प्राइमरी एनिस्टस ओवेरियन स्टेक्टमी कर दी और आप तो छोटा पिल्ला लेके आए हो, ओवेरियन स्टेक्टमी पहले करा रखी थी, आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं आ रहा. देन हाई एलएच, अगर ओवेरियन स्टेक्टमी कर रखी है तो एलएच हाई होगा, एंटीकोलेरियन हार्मोन लो, ये टेस्ट करके. देन क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, यूज ऑफ प्रोजेस्टेरोन फॉर सप्रेशन और लॉन्ग यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, congenital hypothyroidism, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. हाइपोथायराइडिज्म खास तौर से ये उनका लैब्राडोर में अगर वो ज़्यादा सुस्त पड़ा रहता है तो आप सोचिए कि हाइपोथायराइड हो सकता है. एंड यू गेट इट T3 T4 TSH पैनल और आप उस हिसाब से उसको एड्रॉप्शन शुरू कर सकते हैं. Then secondary is very common with weak dogs and dog with thyroid dysfunction. अब therapy बड़ी simple है. You can give caprolactam 5 micrograms per kg until an induced pro-estrus is pronounced for 2 days. ठीक है ना, 2 दिन अगर bleeding हो गई फिर आप typically 7 to 14 days administration is sufficient to reduce estrus in dogs. For cats, follicle-stimulating hormone 2 mg the first day, followed by 0.5 to 1 mg intramuscular daily for additional 4 additional days. This is the. हमने तो ऐसा मेरे को याद पड़ता है कि हमने एक दो कैट्स का ट्रीटमेंट कैब्रेडोलिन से ही किया था. Silent treatment in small dogs reporting first estrus, no vulvar edema, and attraction towards male dog. Progesterone profiles every month can help. GnRH injections have been suggested. Silent estrus है तो cattle में भी suggested है कि अगर कोई गाय जो है silent estrus में रहती है तो आप on the day of estrus GnRH लगा दीजिए ताकि अगली जो उसकी estrus होगी वो silent नहीं है. Recurrent estrus, short and inter-estrus intervals or poly-estrus, there is decline in fertility. Inter-estrus period shorter than 4 months, except in Alsatian, Labrador, Cocker Spaniel, and Rottweiler dogs. Where 4 महीने से पहले वो breed में आ रहे हैं इन breeds को छोड़. For this purpose, 2 mg per kg per day. Glycerol acetate should be given starting from day 2 to 3 of progesterone. Then long estrus, persistent estrus of longer than 21 days. इसका एक और तो हमने पहले बात कर लिया कि आप सोच रहे हैं estrus में है जितनी हो सकता है उसको DVT हो. दूसरा हो सकता है कि follicular cyst हो या फंक्शनल ओवेरियन ट्यूमर जैसे कि ग्रैन्युलोसाइट और
प्रिजम्पटिव करना पड़ता है। कई बार अल्ट्रासाउंड से आपको दिखता तो है नहीं फॉलिकुलर ओवरी के फॉलिकल्स वगैरह, तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं। कई बार क्या क्लिनिशियन को प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस पे भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्या आप सोच लीजिए कि इसको जो है ओवेरियन सिस्ट है, तो आप एक एचसीजी का इंजेक्शन लगाएं। 22 international units per kg bladder intramuscular route for 3 days and DNRH administration at a dose of 10 microgram per kg via intramuscular route for 3 days. Bone marrow suppression may develop in dogs with persistent disease. ये बड़ी प्रॉब्लम। लॉन्ग रोइस्टर्स हो सकता है, लॉन्ग प्रोइस्टर्स या लॉन्ग ईस्टर्स, इन दोनों में जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा दिन तक हो सकते हैं एंड थेरेपी सजेस्टेड इज वेल स्ट्रॉन्ग। ओवेरियन सिस्ट जो है वो लिम्बिक कोर्स पर लिखती है कि मोस्टली डिटेक्टेड इन ओल्डर एजेस एट ओवेरियन सिस्ट, एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है और ज्यादातर वो ओवरी के अंदर नहीं होके पार ओवेरियन होती है, मतलब ओवरी के बाहर फॉलिकुलर सिस्टिक स्ट्रक्चर होते हैं। Frequently of paradoxal ovarian with low proportion showing clinical signs, कई में clinical signs होते ही नहीं। Estrogen producing cyst is sometimes produce persistent issues with verbal discharge, gland alopecia and hyperkeratosis। जैसे मैंने कहा कि persistent अगर bleeding के persistent issues of 21 days या pro issues which have lasted for 40 days, तो उस केस में आप GnRH या HCG ये लगा सकते हैं। Then there is a condition for the hypoleucidity, lack of progesterone support resulting in abortion। तो इसका पता कैसे लगेगा? अगर आपकी डॉग जो है वो 20 डेज प्रेग्नेंट हो गया, उसके बाद आप एक उसकी प्रोजेस्टेरोन सप्लाई करें। अगर प्रोजेस्टेरोन लो आ रहा है तो आप उसको प्रोजेस्टेरोन 2 to 5 मिलीग्राम पर केजी ओरली फ्रॉम डे 20 शुरू कर दें और 63 से 5 दिन पहले, यानी कि कितना हो गया 63 - 5, तो उस टाइम पे आप बंद करें। Then there are some clinical cases, refusal of estrus stimulate to breed when presented to a male। तो ये कुछ behavioral problems हो सकती है क्योंकि कई बार क्लिनिशियन के सामने आती है। What you can do is you can ask the owner to try to change the male and see if it sets the male for breeding। Then persistent time in vaginal hyperplasia is the cause of leak hyperplasia and then the dog ovarian remnant syndrome, आपने ovarian hysterectomy कराई और बाद में जो है ओवरी का एक छोटा सा पीस रह गया, वो वापस जो है हीट में आना शुरू हो गई। और आजकल वो ये भी कहते हैं कि अगर आप ओवेरियन हिस्टेरेक्टमी करा रहे हैं तो ठीक है, वहां से तो ओवरी निकलवा लीजिए, लेकिन ओवरी की थोड़ी सी टिश्यू आप स्टमक में लगाएं, ऐसी रिपोर्ट्स पड़ी हैं, सो दैट माइल्ड लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन आर मेंटेन्ड एंड द डॉग डज नॉट फेस प्रॉब्लम्स इन यूरिन पासिंग। क्योंकि क्या एस्ट्रोजन बिल्कुल विड्रॉ कर देते हो ना तो यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर हो जाता है, तो यूरिन पास करने में दिक्कत होती है।
वो कहते हैं आप पेट के ऊपर वहां लगा, थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन बनाती रहेगी, ग्राफ्ट कर दो वहां। कहते हैं मेरे टिश्यू बाद में सर्जरी से रिमूव कर दो, सर्जरी से पड़े। तो थैंक यू वेरी मच। और ये पेशेंट लिस्ट नहीं, अब मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ जो आपकी पेंडिंग है ना, वो आपको वीडियो, इसमें कोई आपका क्वेश्चन, कोई क्वेरी, एनीथिंग यू वांट टू ऐड और सप्लीमेंट टू माय टॉक, या मोस्ट वेलकम। The role of PG, आपने तो बताया था कि हम ऑर्गेनाइज होते हैं। हाँ, हम बायोमेट्रा में PG के इंजेक्शन बायोमेट्रा में तो इसलिए कि आपको पता है कि सीएल परसिस्टेंट है ना, और आपको पता है कि यूट्रस में पस एक्यूमुलेटेड है, तो यूट्रस तो रिलीज करेगा ही नहीं, तो आप एक्सटर्नली देंगे, इट विल हेल्प टू वेज, इट विल कॉज यूटिलाइजेशन, इट विल हेल्प इन कंट्रैक्शंस इन द यूट्रस एज वेल। जो वेजाइनल हाइपरप्लेसिया है उसमें हम 50 माइक्रोग्राम जीएनआरएस दे रहे हैं। हाँ, that will be around 10 to 12 ml, 0.004 MCQ। वो हो सकता है उसमें कहीं गलती हो, 50 माइक्रोग्राम नहीं, 50 माइक्रोग्राम नहीं, 5 माइक्रोग्राम, ऐसे ही सम एरर। 50 माइक्रोग्राम तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें 4 माइक्रोग्राम पर ml होगा, तो 50 माइक्रोग्राम तो कैटल में भी नहीं, गलत एरर। Any other question? Any other contingent question? ये तो फिर मैं आपको वो वीडियो So this is the mating in the canal. The male is brought near the female, will sitting, and the male will देखिए आप अपना फ्रॉज आ रहा है, तो इतनी आवाज कर रहा है, बैठेगा हाफ सिटिंग पोस्चर में, this is the division of the cells in a embryo. देखिए 2 cells हैं, 4 cells, 4 से 8, 8 से 12। And this is introducing an endoscope with the esophagus of a horse. देखिए आप कैसा दिखता है। This is the stress in air. Then this is ICSI. इधर से माइक्रोस्कोप के नीचे होल्ड किया, एक स्पर्म को लिया और एक स्पर्म को उस साइड के अंदर घुसा,
intracranial sperm injection. And this is the cell transfer. ये अंदर घुसा है इधर से बोल्ट कर लिया सेट और उसके अंदर ये सेल्स and this is fertilization sperms taking the inside and this is ये ट्रांसरेक्टल कॉम्बिनेशन जोड़ी को हमने एक तरफ खड़ा करके इधर हम खड़े नीचे वाले दोनों पाँव आगे वाले एक पाँव से बांधते हैं और एक दीवार की इस तरफ इसको खड़ा किया उधर बंद कर कॉर्पोरेट थोड़ी डोसाइल होती है आपको आराम से कर लेते हैं क्योंकि ये देसी हो गया रोल होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इनकी हैबिट नहीं होती है कॉर्पोरेट की तो हैबिट होती है ये यहाँ पे लाओ ऐसे एक रोल कर सकते हैं नीचे वाले पाँव आगे वाले एक पाँव और उस पाँव को फिर बांधते हैं आपने फिर भी यहाँ पे एक पेच लगा लें बैंडेज लगाते हैं क्योंकि जो हेयर होते हैं ना वो जब रेक्टम में चले जाते हैं थोड़ी इंजरी करते हैं Thank you very much for your patient listening. Any question, any query, any suggestion you